Hi students, welcome in my channel. In this video we are going to learn the poem Night of the Scorpion. Okay, this poem is written by or composed by Nazim Ezekiel. Okay, so students, now we have to start the poem 3.1 Night of the Scorpion. Okay, started in. Before that I request you like, share and subscribe my channel to get the notification of new videos. Okay, 3.1 Night of the Scorpion warming up activity is there. Activity number first, get into pairs and discuss the following with your partners and complete the table. Okay, many people are superstitious. This means that they have belief for which they have no logical reason. An example of superstition is that walking under a ladder brings bad luck. In pairs, list any superstitions that you know of. Okay, क्या करना है? गेट इन पेयर्स मतलब आप हमें पेयर में एक साथ होना है, अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ के नीचे जो टेबल दिया है इस टेबल को कंप्लीट करना है. हमें पता है कि सुपरस्टिशन हमारे सोसाइटी में देखे जाते हैं. बहुत सारे पीपल बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास सुपरस्टिशंस दिखाती है, और वो किस बात के लिए अप्लाइड है वो भी हमें यहाँ पे देखना है. तो ये टेबल में देखेंगे हम. The activity is given there, and the other remaining 4 also activities are completed. You can see there. Okay, number 1, superstitions, smashing a mirror and it applied for brings 7 years of bad luck. Okay, mirror को smash करते हैं तो हमें वो ये जो superstition है और किसके लिए अप्लाई होता है? 7 साल का बैड लक आता है ऐसे कहा जाता है, लेकिन ये सब superstitions है. Cat crossing your path, बिल्ली ने रास्ता काट लिया. Okay, causes you to get delay, काम के लिए देरी होना, कुछ गलत हो जाना. Walking under a ladder, सीढ़ी के नीचे चलना, bring bad luck. Okay, मतलब बैड लक आता है उसे ही. Going near a people tree at night. Okay, रात में पीपल के पेड़ के पास जाना तो किसके लिए अप्लाई है? The ghost will kill you, भूत आके आपको मार देगा. Twitching of eyes, आंखें फटफट करना, bring bad luck. ये किसके लिए है? बैड लक bring करेगा, इस तरह की ये भी एक superstition है. This all in the first table, the all things mentioned, okay, all elements mentioned are superstitions. Okay, and in the second table you can find for words that are applied. Okay, so next thing that we have to see, the second activity of warming up. Okay, this is the second activity. Brainstorm what you know about a scorpion. Use the points given below. Okay, नीचे जो पॉइंट्स है उस पॉइंट की हेल्प लेके आपको स्कॉर्पियन के बारे में क्या क्या पता है लिखना है. First, how they attack. Okay, scorpions usually sting their victim and inject their venom into their bodies. कैसे अटैक करते स्कॉर्पियन? उनका जो स्टिंग होता है उसे अपने विक्टिम पे, मतलब जो भी उनके सामने है उन्हें उसे वो डंक मारते हैं और अपना पॉइजन उनकी बॉडी में छोड़ देते हैं. सेकंड क्या है? वेयर दे लिव, कहाँ पे रहते हैं? स्कॉर्पियंस लिव इन अ डेजर्ट, पूल्स एंड वेरेवर देयर इज अ लिप्स ऑफ रबिश और गार्बेज. ओके, कहाँ कहाँ पे रहते हैं स्कॉर्पियंस? डेजर्ट में सबसे ज्यादा स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, उसके बाद छोटे मोटे जो होल्स होते हैं वहां पे भी, और जहां कहीं पे कुछ गार्बेज या कुछ रबिश चीजें दिखेगी वहां पे आपको स्कॉर्पियंस नजर आएंगे. ओके, मींस दिस इज द प्लेस ऑफ स्कॉर्पियन वेयर दे यूज्ड टू लिव. थर्ड थिंग इज देयर अपीयरेंस, हाउ दे लुक्स. देयर अपीयरेंस मींस हाउ द स्कॉर्पियंस लुक. स्कॉर्पियंस हैव 8 लेग्स. स्कॉर्पियंस को कितने? 8 लेग्स होते हैं, पैर होते हैं. अ पेयर ऑफ ग्रास्पिंग पेडिपल्स. ग्रास्पिंग पेडिपल्स मतलब सामने जो इस तरह का होता है ना ऐसे, तो उसे ग्रास्पिंग पेडिपल्स कहा जाता है. एंड द नैरो सेगमेंटेड टेल, छोटा सा एक टेल होता है. ऑफन कैरीड इन अ कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड
कर्व्ड ओवर द बैक, और उसे इस तरह से टेढ़ा किया वाला होता है, एंड एंडिंग विथ अ वेनमस स्टिंगर, और उसके लास्ट में कांटे जैसे होता है ना, स्टिंगर उसे कहा जाता है, जो पॉइजनस होता है, वेनमस होता है। इसका मतलब इस तरह का अपीयरेंस हम बिच्छू का देख सकते हैं, स्कॉर्पियन का देख सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज देयर any more information about them means about the scorpions. Okay, scorpions can live in harsh climate by slowing down their metabolism. जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो हार्श क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसे वो स्लो कर सकते हैं, कम करके किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को सेट करके रह सकते हैं। मोस्ट पीपल एसोसिएट देम विद पॉइजनस स्टिंग्स, बहुत सारे लोग उन्हें किस चीज के साथ एसोसिएट करते हैं, पॉइजनस स्टिंग्स के साथ उन्हें एसोसिएट करते हैं। देयर स्टिंग इज पॉइजनस एंड कैन किल, उनका जो स्टिंग है वो पॉइजनस होता है और उससे किसी की जान भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, okay, before starting the poem, before beginning the poem, we have to know the little bit introduction of this poem. So let's start introduction of this poem. 3.1 Night of the Scorpion. The poem Night of the Scorpion by Nazim Ezekiel. Okay, means this poem is composed by Nazim Ezekiel. Nazim Ezekiel born in 1942 and he died 2000 in 2004. He was an Indian Jewish poet, actor, as well as playwright, editor, and art critic also. He was a fundamental figure in post-colonial India's literary history, especially for Indian writing of a wider range. This poem is about an incident that the poem has not forgotten in his life. The poet remembers this incident. It was a night when a scorpion bit his mother and all the superstitious villagers did irrational things rather than helping her. So, what is exactly in this introduction we have to see? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो पोएम है नज़ीम एज़ेकिएल इन्होंने कंपोज की है, जिनका बर्थ 1924 में हुआ था और उनका देहांत जो है 2004 में हुआ। वो एक इंडियन ज्यूइश कम्युनिटी के पोएट थे, उसके बाद वो एक्टर थे, प्लेराइट भी थे, प्लेराइट में ड्रामेटिस्ट थे, एडिटर और आर्ट क्रिटिक इसी तरह के उन्होंने काम किए हैं। उसके बाद अगर इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करें तो इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री में एज़ेकिएल, नज़ीम एज़ेकिएल ये एक फंडामेंटल फिगर है इन पोस्ट कॉलोनियल। व्हाट इज मीन बाय पोस्ट कॉलोनियल? इट मींस after the establishment of colonies by the Britishers in India. Okay, after that the period we call it the post colonial period. Okay, जब ब्रिटिश लोगों ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी उसके बाद का जो एरा है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में नज़ीम एज़ेकिएल इनका सबसे अहम भूमिका वहां पे रह चुकी है इंडियन राइटिंग में। रूनी की बदौलत इंडियन जो राइटिंग है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इंडियन लिटरेचर पूरी दुनिया में फैल चुका है। उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स कंप्लीट किए हैं। एंड इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, एक इंसिडेंट के बारे में कहता, जो कहना चाहता है, जो ऐसा इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट को पोएट कभी भी नहीं भूलना चाहता, वो उसे हमेशा याद आता है। ओके, कौन सी चीज हुई थी एग्जैक्टली उस इंसिडेंट में? ओके, It was a night and when Scorpion beat his mother. उस दिन क्या होता, एक ऐसी नाइट, भयानक एक रात थी। उस रात में एक बिच्छू ने पोएट के मम्मी को डस लिया था। और उस वक्त क्या विलेजर्स आ गए, ये बहुत सारे विलेजर्स थे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी सुपरस्टिशियस थी। मतलब ये पोएम जो है ये सुपरस्टिशन पे टॉकिंग करने वाली है, बात करने वाली है। तो वो जो लोगों की जो सुपरस्टिशियस थिंकिंग है और जो इरेशनलनेस है वो यहाँ पे हम देख सकते हो। बहुत सारे विलेजर्स आ गए, बहुत सारे वो सभी के सभी सुपरस्टिशियस थे और उन्होंने पोएट के मम्मी को हेल्प करने के वजह क्या किया, इरेशनल थिंग्स वहां पे करने लगे। ओके, दिस वाज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सी द थीम। ओके, व्हाट इज द थीम?
The poet depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. इस पोएम में पोएट मदर का सेल्फलेस लव डिपिक्ट करता है, बताने की कोशिश करता है जिसे बिच्छू ने काट लिया था. The poem expresses the superstitions that dominate the mind of Indians and also the motherhood of a lady who just think only of her children even in the worst condition. उसे के साथ इस पोएम में जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन जो है उसने हमारे इंडियन लोगों के माइंड पे किस तरह से डोमिनेटनेस किया है, ये भी इस पोएम में हम देख सकते हैं. उसके बाद जो मदरहुड है, ओके, मदरहुड के बारे में भी इस पोएम में है, जो कि खुद एक बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, तो भी वो लेडी अपने बच्चों के बारे में ही बस सोचती है. ये सेल्फलेस लव भी इस पोएम में हम देख सकते हैं. और नेक्स्ट थिंग, द पोएम हैज नो राइम स्कीम. इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ फ्री वर्स पोएम. ये एक फ्री वर्स पोएम है. Okay, next thing that we have to see, this is the first stanza of our poem. Okay, and one by one we will see all stanzas. First stanza, first of all we have to read, and after that we have to explain it. First stanza: I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of a steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Okay, so what exactly the poet want to say by this stanza? By this stanza, poet want to say that he remembers the night when the scorpion stung to his mother. From 10 hours, from last 10 hours, there had been raining, and that scorpion was hiding beneath a bag of rice to escape the rain. Okay, क्या कहना चाहता है पोएट को? वो रात आज भी याद है, अभी तक याद है, जिस रात में उस स्कॉर्पियन ने उसके मम्मी को, उसके मदर को डस लिया था, और उसी दिन बाद 10 घंटे से जोर की बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. और उसी वक्त उस बारिश की वजह से बिच्छू घर के अंदर घुस गया, और जहाँ पे राइस के बैग्स थे रखे वाले, चावल के बैग थे, उस बैग के वहां पे वो आके उसने खुद को छुपा लिया था. खुद वहां पे खुद को छिपा लिया था. किसने? बिच्छू ने. क्यों? क्योंकि खुद को वो रेन से बचाना चाहता था. नेक्स्ट स्टांजा: parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Okay, parting with it means transferring the poison into the body, and diabolic, this word is used for devil, evil or wicked things. Okay, मतलब बुरी चीज है. So what exactly the poet want to say by these 3 lines? Okay, the poet want to say that the scorpion had beaten or stung to poet's mother, to his mother, and after parting with his poison in the dark room, he had gone back into the rain with evil flash of its tail. So what exactly the poet want to say by this line? Poet want to say that when that scorpion beaten to his mother, and after that the sting, okay, the sting of that scorpion started to transfer the poison in the body of poet's mother. Okay, and that's why dark room, this word is used for the body. And after that, after the stung, that scorpion went back into the rain. Okay, so क्या कहना चाहता है पोएट इसमें? पोएट ये कहना चाहता है कि स्कॉर्पियन ने पोएट उसके मम्मी को काट लिया, डस लिया था, उसके बाद उसका जो पॉइजन है, किसका? बिच्छू का पॉइजन ट्रांसफर होने का प्रोसेस शुरू हुआ, पूरे बॉडी में वो फैलने लगा है, और उसके बाद बिच्छू क्या करता है? बाहर. नेक्स्ट स्टांजा इज देयर: The peasants came like a swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Okay, peasant, this word is used for villagers. A swarm, it means a group, and paralyze, this word is used for to stop an activity. Okay, which activity? Transferring the poison, this activity. So, what is the meaning of this stanza?
Next stanza. The peasants came like a swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. So peasant, it means villagers. Swarm, this word is used for groups, and paralyze, okay, this word is used in this stanza for to, to stop an activity. Okay, so what is the meaning of this stanza? By this stanza, poet want to say that when the villagers heard the news of beaching the scorpion, then they all came at the house of poets like a swarm of flies. Okay, means group of flies. After that, the villagers started to chant the name of God 100 times. They thought if they did chanting, then they can stop the activity of poison, which was evil one. Okay, so what exactly the poet want to say by this paragraph? Poet want to say that when the scorpion was turned to his mother, and when this news spread in the village at that time, the villagers came there like a swarm. Okay, swarm of flies. Okay, this phrase is used there because poet doesn't like that people because they are superstitious. After that, when that all villagers came there, they started to chant the name of God. Okay, means they are just chanting the name of God. They are just making a namasmarni in short. And after that, we have to know the villagers thought if they did the chanting the name of God, and definitely the process, the activity of poison will stop. They were just thinking that, and we know that this is the superstition, okay, that we have found in this poem. So what exactly poet want to say? पोएट इसमें क्या कहना चाहता है? जब उसके मम्मी को या मदर को बिच्छू ने डस लिया, ये न्यूज जब गांव में फैल गई तो गांव के पूरे लोग इकट्ठा हो गए, झुंड ही झुंड में पूरे लोग उनके घर पे आ गए, और जैसे घर पे आ गए उन्होंने क्या किया? गॉड का नाम लेना शुरू किया। ओके, और उन्हें लगता है कि इस तरह की चांटिंग करने से, गॉड का नाम हजारों बार लेने से क्या होगा कि जो पॉइजन है, पॉइजन जो बढ़ता है जब बिच्छू डसने, वो पॉइजन कम हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये उनकी सुपरस्टिशन है, ये पूरी सुपरस्टिशियस लोग हैं जो कहीं पे भी पाए जाते हैं, और उन्हें ऐसे लगता था इस तरह से करने जो इविल एक्टिविटी है, मतलब पॉइजन बॉडी में जा रहा है, वो शायद स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट स्टांजा इज देयर। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-backed wall. They searched for him. He was not found. They clicked their tongue with every movement that the scorpion made his poison. Moved in mother's blood, they said. Okay, so in this paragraph also we can find some superstitious things. Okay, by this stanza, poet want to say that villagers had reached the searched the scorpion with candles and lanterns. Okay, the shadow of them means the shadow of the villagers on that mud wall looked like a giant scorpion. The villagers searched for scorpion, but they did not find him. They clicked their tongue to show the frustration and sorrow. They said that with every movement, the scorpion made the poison move in the poet's mother's blood. So what exactly the poet want to say by these lines? He want to say that ये जो विलेजर्स है अपना कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके बिच्छू को सर्च कर रहे, यहाँ वहां पे ढूंढ रहे हैं, और उसी रात में देखो जो वो रात थी तो उनके हाथ में जो कैंडल्स और लैंटर्न्स थे, और उससे वो क्या कर रहे थे? बिच्छू को सर्च कर रहे थे। लेकिन अभी जो घर होता है, मड वॉल जो होता है, जो मड से बनाए वाली दीवारें होती, उस दीवारों पर इन्हीं विलेजर्स के बहुत बड़े बड़े शैडोज दिख रहे थे। उन शैडो के लिए पोएट ने जायंट स्कॉर्पियन ये वर्ड यूज किया है। उससे लगता है कि ये जायंट स्कॉर्पियन है, लेकिन वो क्या थे? उन विलेजर्स के शैडोज थे, छांव थे। ओके, परछाइयां थी, तो पोएट को लगता है ये जायंट स्कॉर्पियन है। ओके,
उन्होंने बहुत उन लोगों ने वहां पे सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिच्छू कहीं पे भी नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी टंग क्लिक कर दी, ऐसे मुड़ा दी, और मतलब ऐसे जो जुबान है, टंग है, दांतों के नीचे ले लिया, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन और सॉरो दिखाना चाहते, उससे वो जो एक्टिविटी है वो अपना सॉरो या फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए वो यूज किया है। एंड लास्टली देखो क्या कहते हैं, they said that every moment the scorpion made the poison moved in the poet's mother body। वो क्या कहना थे, जितना वो पॉइजनस स्कॉर्पियन है, वो जितने मूवमेंट करेगा, जितने कुछ एक्टिविटी करेगा, उतना ज्यादा पॉइजन पोएट के मम्मी के बॉडी में, ब्लड में उतना ज्यादा पॉइजन फैल सकता है। इस तरह से उनकी वो सुपरस्टिशियस थिंकिंग है। ओके, और वो क्यों उसे ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि दैट विलेजर्स वांट टू किल दैट स्कॉर्पियन। ओके, व्हाई दे वांट टू किल, बिकॉज दे थॉट the movement made by that scorpion, that movement would spread more poison in the body of poet's mother, and that's the reason the villagers want to kill that poisonous scorpion. Next paragraph is there. May he sit still, they said. May the scene of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease, the misfortune of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. So what exactly the meaning of this stanza we can see there? By this stanza, poet want to say that the villager said the scorpion may sit still there, okay? Because we know that in last paragraph we have seen they were searching, and lastly they said that maybe that scorpion sit still there, and after that the villager said the scenes, okay, scene it means path, okay? The scenes of her means the poet's mother previous birth would be burned away that night, okay? And they said that her present suffering would decrease any misfortunes in her next birth. They hope that the balance of the sum of all the evil in this world against the sum of good would be diminished by her pain. So what exactly the poet want to say by this? Poet want to say that villager, first of all, villagers said maybe the scorpion is there, and after that, okay, once again the superstitious thing we can see there. According to the villagers, when the mother of the poet was stung by a scorpion, they said maybe, okay, maybe the previous birth some activity, okay, and because of that previous birth activity, this scorpion was stung to her, okay, पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे और उसी के बदौलत शायद बिच्छू ने उसे काट लिया होगा, okay? And when this scorpion stung to the poet's mother, and after that once again we can find there the next superstitious thing, and in that next superstitions we can find the villagers said, okay, in the present whatever that woman or the mother of that poet was suffering, okay, the suffering of this present time may be decreased a little bit misfortunes of the next birth. प्रेजेंट में जो वो कुछ सफरिंग कर रही है वो बिच्छू काटने की वजह से, शायद इसकी वजह से उसके नेक्स्ट बर्थ में जो भी कुछ मिसफॉर्च्यून्स होंगे, जो भी कुछ गलत चीजें होगी वो शायद कम होगी, ओके? ये फिर से प्रीवियस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ, ये भी सुपरस्टिशन है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके? एंड लास्टली उन्हें ऐसे लगता है कि ये बिच्छू काटने से उनके प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ और प्रेजेंट बर्थ
इनका अभी बैलेंस हो चुका है और ये जो पेन है अभी वो क्या होगा, डिमिनिश होगा। ये जो बिच्छू काटा है, बिच्छू काटने की वजह से ये पेन डिमिनिश हो जाएगा। जैसे जैसे ये डिमिनिश होता जाएगा उसे उसे अच्छा लगेगा। मतलब ये पूरी सुपरस्टिशन चीजें हैं। So what we have to understand by this paragraph, by this stanza, one thing, first superstition thing is mentioned there, and that is about the previous birth and the next birth. Okay, according to that villagers, why that scorpion stung to that woman, because maybe she did a little bit uh, bad things in the last birth, and that is the reason that scorpion stung to her. Okay, this is superstition. And what the next superstition is there, the villagers thought whatever she is suffering in the present time, this suffering will decrease the misfortune in the next birth. Okay, and lastly they hope now this is the balance, okay, of evil things and good things. Okay, when she is facing the much pain because of that scorpion's tongue. Next thing is that may the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, and the piece of understanding on the each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more insect, and the endless rain. Okay, so in this stanza, poet want to say that the villagers prayed that the poison would purify her flesh of any desire and spirit of any ambition. They sat around the floor with the mother in the center, and there was a piece of understanding on every face. More neighbors came in to help with more candles and more lanterns. There were more insects, and the rain continued endless. So by this stanza, the poet wants to say that the villagers prayed to God to purify the flesh, means to purify the body of poet's mother, and after that they pray for the God the poison would purify. When that poison was transferred in the body of poet's mother, they thought this poison will purify her flesh. After that, they talk about the desire and spirit of any ambition. Okay, and after what they did next, okay, the mother was in the center, and the all villagers and neighbors sit there making a round, making a circle, and in the center the poet's mother was there. And when they were talking to each other at that time, on the face of every villagers there were some symbols. They understand all things, and that's why the face was very peacefully, because we know that they all villagers are superstitious, and that's why they were agree with each other. But we know that they all are superstitious people, and they are doing some irrational things there. Okay, and one by one the villagers and the neighbors were coming there with the lantern and candles. Okay, and because of that lantern and candles, more insects were coming there, and beside the rain was continuously falling. Okay, the rain was not stopping there. Okay, क्या कहना चाहता है पोइट इसमें? ये विलेजर्स सब क्या कहते हैं, गॉड को प्रे करते हैं कि ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन जब इसके उस पोएट के मदर के बॉडी में जाएगा तो ये उसे प्यूरिफाई करेगा, उसे डिजायर से प्यूरिफाई करेगा, उसका स्पिरिट प्यूरिफाई होगा, उसके एम्बिशंस प्यूरिफाई होंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे ऐसे एक जगह पे बिठाते हैं फ्लोर पे, ऐसे नीचे होता है, नीचे होती है पोएट की मदर, और सारे लोग ऐसे सर्कल करके बैठते हैं, और सेंटर में पोएट की मदर को रखा हुआ होता है, और वो आपस में बात करते हैं कि क्या होगा, ये मतलब जो पॉइजन उसके बॉडी में फैल रहा है, उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी। ये इस तरह के
सुपरस्टिशियस बातें वो लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हर किसी के चेहरे पे एक अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि सब लोग एक दूसरे की चीजें समझ रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि वो सुपरस्टिशन है, ठीक है। और उसके बाद नेबर भी वहां पे जमा होने लगे, उनके साथ उनके हाथों में कैंडल है, लैंटर्न्स है, और जितने लोग ज्यादा आने लगे उतने ज्यादा इंसेक्ट भी आने लगे वो लैंप की वजह से, लैंटर्न की वजह से। और बाहर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली वो बारिश शुरू ही है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। Okay, so next stanza is there. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic rationalist, trying every curse and blessings. Powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put on a match on it. Okay, skeptic it means disbelievers, जो आम चीजों पे, कोई भी चीजों पे भरोसा नहीं करने वाला। Rationalist it means a person who believe in a reason and knowledge than opinion and beliefs. Rationalist मतलब ऐसे आदमी जो लोग होते हैं जो रीजन एंड नॉलेज पे भरोसा करते हैं, किसी के बिलीफ और ओपिनियन पे नहीं करते हैं। ग्रोनिंग इट मींस मोurnful साउंड कन्वेइंग पेन और ग्रिफ। ग्रोनिंग इट का मतलब जो दुख भरा साउंड होता है ना, दुख भरा साउंड उसे कहते हैं, जिससे हम कितना पेन कर रहे हैं, उस तरह की जो मोurnfulनेस है वो बाहर आती है, उसे ग्रोनिंग साउंड कहा जाता है। किसी दर्द की वजह से जो कराना होता है, अलग अलग आवाजें जो निकलती है ना, तो उसे ग्रोनिंग कहा जाता है। Okay, and lastly, hybrid. This word is used here for mixture of two medicine. When two medicines we use to mix, and for that hybrid this word use. And paraffin it means waxy material. Okay, the material made out of wax. Okay, so by this stanza, the poet want to say that the poet's mother's entire body was twisted and turned as she lay groaning on the mat. The poet's father was a rationalist, a person who believed in a reason and knowledge and doubted all things. However, at that time, he tried every curse and blessings. He also tried powder and mixture, herbs and hybrids. He poured a little paraffin on the beaten toe and lit it with a matchstick. So, by this stanza, poet want to say that his mother was suffering much pain because of that scorpion's tongue, because of that poison of scorpion. Okay, and that's why she was groaning there on the mat. Okay, and after that, poet talks about his father. His father was a skeptic and a rationalist person who was believing in a reason and knowledge. Okay, and that's why he was doubted all things. But at that time, what was the possible? The poet's father was doing that all things. Okay, he tried some powder, he tried some herbs, some medicines. Okay, and after that, he whatever was possible, that all things the father of poet was doing there. He applying so many things there because the poet's father just want to do one thing. He just feeling there anyhow. Okay, anyhow the mother of poet become a good. Okay, only that thing the poet's father wants there, and that's why he was trying so many things there. Okay, and lastly, the poet's father used to pour a little bit wax there. Okay, and after that, okay, where that scorpion was stung on that toe, poet's father poured a little waxy material, and after that lit it with the matchstick. Okay, so what we have to keep in mind, पोएट के मदर की इंटायर जो बॉडी है वो ऐसे ट्विस्टेड कर रही थी, उसे दर्द कर रही थी, कर रहा नहीं थी, दर्द की वजह से मैट पे बस इधर उधर हो रही थी। और उसके बाद पोएट अपने फादर के बारे में बात करता है। पोएट के फादर जो रैशनलिस्ट है, ओके, जो बस रीजन और नॉलेज पे भरोसा करते हैं। उसके बाद जो भी चीजें पॉसिबल होगी वो हर एक पॉसिबल चीज वहां पे पोएट का फादर करना चाहता है। किसी भी हालत में वो बस एक चीज करना चाहता है कि पोएट की जो मम्मी है, पोएट की जो मदर है वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए वो अलग अलग ही पाउडर वहां पे
वो जहाँ पे बिच्छू काटा वहां पे वो अप्लाई कर रहा है, अलग अलग मिक्सचर्स बना रहा है, बहुत सारे हर्ब्स और हाइब्रिड चीजें है, वो भी वहां पे अलग अलग दो दो मेडिसिन मिक्स करके कुछ दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट में क्या होता है, एक थोड़ा वैक्सीन मटेरियल जो होता है वो उस टो पे लगा देता है, उस उंगली पे लगा देता है जहां पे स्कॉर्पियन ने काटा था, वहां पे उसे क्या करता है वो थोड़ा पैराफिन मतलब वैक्सीन मटेरियल लगाता है और उसे मैच स्टिक से जलाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग stanza is there. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man performs his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. Okay, right? It means religious act. जो धार्मिक कर्मकांड होते, कृतियां होती है, उसे religious act और rites कहा जाता है। और incantation, it means chanting of words claimed to have magical power. मतलब कोई जादू हो सके, इसके लिए जो मंत्र बोले जाते हैं ना, मंत्र उसके लिए आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। incantation, it means mantra. In this stanza, poet want to say that the poet watched that the flame grew bigger and bigger. A holy man, we know that the person who used to do the religious things, we call it holy man. Okay, like sadhu. Okay, like this. A holy man performed rites to make the effects of the moon laser with the magical chant. After 20 hours, it lost its sting. Okay, by this stanza, we have to know that poet watched that things. Okay, the flame of that waxy material become bigger and bigger, and same time a holy person came there and he was performing some religious acts. Okay, and he thought that when he used to make that a religious thing, or when he used to use some words to make magical, but that all things didn't do any effect. And after 20 hours, okay, after 20 hours, the poison was loosed, the sting was lost, and the mother become as usual, become good. Okay, so क्या हुआ, पोएट ने ये भी चीज देखी है, उसका जो फ्लेम था वैक्सी मटेरियल का जिसपे आग लगाई थी, वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। मम्मी अलग बहुत पेन वहां पे फेस कर रही है। उसी वक्त जो होली मैन आते, कुछ धार्मिक कर्मकांड वहां पे वो करते हैं और कुछ मंत्र वहां पे बोलते हैं, और उन्हें क्या लगता है उस मंत्र की वजह से, मंत्र तंत्र की वजह से शायद पोएट की मदर के बॉडी में जो पॉइजन फैल रहा है, उस पॉइजन से उसे छुटकारा मिलेगा, उसका दर्द कम होगा। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई। करीबन 20 घंटे के बाद वो पॉइजन रिड्यूस हो चुका था, और उसके बाद उसके मम्मी को बेटर फील हो रहा था। Okay, next, this is the last stanza of this poem. My mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." Spared, it means not to not hurt. So in the last stanza, we can see the endless love of mother. Okay, the selfless love of mother. And by this stanza, the poet want to say that at the end of the poet's mother thanked to God, she thought that the scorpion had chosen to bite her and spared her children. It shows the selfless love of the mother. Okay, so by this stanza, we have to know that at the last, the mother of poet said thank to God. Why? Because according to her, the scorpion picked her to sting, but not chosen to children. Okay, means she suffered that all things, she suffered that all pain. Okay, but lastly she became happy because that scorpion didn't stung to the children, and that's why she said thanks to God. Okay, and we have to know that this is the symbol of selfless love of mother. Last में क्या होता है, at the end of this poem, पोएट की मदर गॉड को थैंक कहना चाहती है। क्यों थैंक कहना चाहती है? वो सोचती है कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काट लिया, काटने के लिए मुझे चूज किया,
ना कि मेरे बच्चों को काटा। ओके, उसके लिए वो थैंक करना चाहती है। क्यों कहना चाहती है? क्योंकि बिच्छू ने उसके बच्चे को बख्श दिया है। उस स्कॉर्पियो ने बच्चों को कोई भी हार्ट नहीं किया है। उसी के लिए वो उसे भी थैंक करना चाहती है, गॉड को भी थैंक कहना चाहती है। और इस तरह से हम एक मदर का, एक माँ का सेल्फलेस लव देख सकते हैं। ओके, so friends, in this way this poem ends here. So once again I request you, if you like my video, then subscribe my channel. After that, like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Thanks a lot.